Assalamu alaikum. Today we have to solve the question answers of no. The first answer here says the title no reflects that every line of the poem, including the last line, November in November, summer comes to an end and the nature is preparing for winter. The negative note tells us that everything is coming to an end as far as plants are concerned. क्योंकि जब नवंबर आता है, सर्दियाँ होती हैं, तो पत्ते झड़ जाते हैं दरख्तों के और ज़िंदगी एक दफ़ा सुस्त पड़ जाती है. तो ये मतलब है नो का कि हर चीज़ को नो कह दिया जाता है. There is a regular rhyming pattern. Some of the lines are rhyming couplets. But this is not constant. We could break it up like this: A, B, C, C, and B. Like the first two lines have rhyming word, B does, the third line does not, C, C have, and fifth one, sorry, does not. So that's the pattern. C question is actually skipped here, and the D answer says that the poem describes a month November. The poet describes this month as being one without warmth or cheerfulness. It has none of the other aspects of feature in some other months of the year. However, he does this is in a cheerful way. So the poem is not depressing or sad. क्योंकि नवंबर में सर्दी का आगाज़ जाता है, दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ज़िंदगी सुस्त पड़ जाती है, जानवर हाइबरनेट होने के लिए चले जाते हैं और ज़िंदगी एक दफ़ा सुस्त पड़ जाती है. लेकिन इसी चीज़ का इजहार नवंबर में किया गया है क्योंकि नवंबर के पहले दो जो लेटर्स हैं वो बनाते हैं नो. लेकिन इस चीज़ को जो पोएट है उसने एक चीयरफुल मैनर में कहा है. इस तरह से नहीं कहा कि इसको पढ़ के अफसरदगी का तासुर मिले. So he says, although the poem is full of negative statements, the poet still manages to make it sound fairly cheerful. The rhyming couplets and the pace at which the poem moves, it helps to make it cheerful. The last line shows he has humor. आखिरी लाइनों में ये पता चलता है कि शायर जो है उसके लहजे में ह्यूमर है. इस नवंबर में इसके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बावजूद वो इनको दिलचस्प बनाता है. And this question answer will be solved on your notebooks. And until next video lecture, Allah Hafiz.